etc. Now, next point. This is a very important point. Types of shock. Okay, so there are different kind of shocks in the that occurs in the patient. So there are cardiogenic shock, hypovolemic shock, septic shock, neurogenic shock, and anaphylactic shock. So these four terms are very important. Okay, so there was a question in GPAT 2019 regarding this hypovolemic shock. Okay, so they might ask you question regarding this septic shock, neurogenic shock, anaphylactic shock, and all that. So see one by one. What is cardiogenic shock? So it is mostly because of myocardial infarction, but may also be result of ventricular fibrillation. Okay, so in both cases, heart is no longer able to pump the blood. If it fails to pump the blood, cardiac output will decrease. Okay, and cardiac output will decrease, and there will be cardiac failure or cardiogenic. That is a cardiogenic shock. Means in this cardiogenic shock, so heart is not able to pump the blood due to various reasons. For example, due to myocardial infarction. Myocardial infarction मतलब क्या है कि मायोकार्डियम है जो मसल जो है मायोकार्डियम मिडल मस्कुलर लेयर वो डेड हो जाता है. That is nothing but the myocardial infarction, and that's why it is not able to pump the blood forcefully. Okay, and the shock which occurs due to this reason, that is nothing but the cardiogenic shock. So in that case you have to use cardiotonics. In that case you have to use cardiotonics, or in that case you have to use adrenaline. Okay, you can directly inject the intracardiac injection of adrenaline. डायरेक्ट हार्ट में ही इंजेक्शन देंगे adrenaline का to increase the cardiac output. So that is a cardiogenic shock. Now next one is a hypovolemic shock. Hypo means less, volumic means volume, less volume of what? Blood. Less volume of blood. So as a result of decrease in the blood volume due to various reasons. So volume, if the decrease in the volume of blood, what are the different possible reasons for the decrease in the blood volume? So there may be a blood loss, there may be a extreme sweating, there may be extreme dehydration, there may be extreme diuresis that will result in the extreme loss of volume. Okay, so as a result of decrease in the blood volume, and it is due to severe blood loss, कि मान लीजिए कि आपका आर्टरी कट हो गया है बाय मिस्टेक और वहां पे ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो आपके बॉडी में वॉल्यूम क्या हो गया, आपका ब्लड का कम हो गया. दैट इज नोन एज हाइपोवॉल्यूमिक. एंड शॉक ड्यू टू दिस रीजन इज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. कि मान लीजिए आपको बहुत ही ज्यादा डायरिया हो गया कि आप टॉयलेट से बाहर निकल ही नहीं रहे, डायरिया हो रहा है कंटिन्यूसली. सो उसमें भी क्या होगा, आपका पूरा वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड का. सो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर हाइपोवॉल्यूमिया. अगेन एक्सट्रीम स्वेटिंग, आपका बहुत ज्यादा पसीना आ गया तो आपका बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम, पसीना कहाँ से आ रहा है, मतलब ब्लड में से ही जो वाटर है वो लॉस हो रहा है, सो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा. सो एक्सट्रीम स्वेटिंग विल आल्सो रिजल्ट इन द हाइपोवॉल्यूम. देन डायूरेसिस, आपका अगर डायूरेसिस ही कर रहे हो, आपका डायूरेसिस ज्यादा, आपको ज्यादा वाइडिंग हो रहा है, if you are suffering from diuresis, again you are decreasing the volume of blood. So these all the reasons are the reasons to decrease the blood volume, and the shock due to this is nothing but the hypovolemic shock. Okay, so the question was like this: the loss of blood volume due to extreme sweating, diuresis, and intestinal diarrhea will result in, and there was an option like cardiogenic shock, hypovolemic shock, septic shock, then blood shock and all that. So there was the answer of hypovolemic shock. It was a question in GPAT 2019. Then next one is because of loss of blood volume, cardiac output will be decreased and heart will fail. Okay, and that is nothing but the hypovolemic shock. Due to result of this condition, there will be loss of blood volume. Okay, and because of decreased blood volume, decrease the heart rate will be there, cardiac output will be there, and heart will fail. That is a hypovolemic shock. So again, anaphylactic shock also comes under sometimes in this category if there is a loss of body fluid in the anaphylactic shock. अगर anaphylactic shock में body fluid का volume
कम हो गया है तो वो भी इसके अंदर आ जाता है हाइपोवॉल्यूम में. ठीक है. Now next one is a septic shock. As the name indicates, septic means there is a sepsis. Sepsis means what? Sepsis means what? Sepsis means there is a accumulation of metabolic product of your bacteria. Okay, metabolic product of bacteria or your own cells. That is known as a septic. Okay, so also known as a bacteriomic or endotoxic shock. Remember, septic shock is known as a bacteriomic or endotoxic shock, and it is due to the infection only. Okay, so it is because of the toxins and bacterial infection which will triggers the massive inflammatory responses and immune responses, and it will release the powerful mediators of pain and inflammation. And if it is not treated, it can damage multiple organs. Okay, then it will depress your myocardial contractility, tissue perfusion rate, and you will have to face the death. So that is nothing but the septic shock. Okay, and it is due to bacterial infection or bacterial endotoxin. Okay, so that is a septic shock. Remember, ये एक बार नाइपर में भी पूछा था, I think, septic shock. Okay. Then neurogenic shock, sudden acute pain, several emotional experience, spinal anesthesia, spinal cord damage can result into neurogenic shock. नर्व को अगर कोई शॉक लग गया आपको, नर्व शॉक, दैट इज न्यूरोजेनिक शॉक. सो जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, जैसे आप मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो गया, तो यू विल फेस न्यूरोजेनिक शॉक. और स्पाइनल एनेस्थीसिया देते समय भी अगर स्पाइनल नीडल अगर गलत जगह डाल दिया उन्होंने, तो फिर न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज एनाफाइलेक्टिक शॉक. So it is due to severe allergic response which is triggered by individual sensitive to substance like penicillins and peanut and other like latex rubber or anything that can be antigenic in nature. Okay, anything that can be antigenic in nature, so that will trigger anaphylactic shock, severe allergic reaction. कि मान लीजिए कि आपको पेनिसिलिन का, मतलब आपने कभी पेनिसिलिन का वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेनिसिलिन का एलर्जी होता नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट में होता है. जैसे मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको. मेरी एक क्लासमेट थी, तो उसका जस्ट नॉर्मल आपका फ्लू हो गया और वो एक लोकल डॉक्टर के पास गई, BHMS था वो कुछ तो, उसके पास गई और उसने उसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दिया. मतलब आप कौन से इरा में हो, पेनिसिलिन कब का आउटडेटेड हो गया, फिर भी आप उसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दो और उसका हिस्ट्री मालूम नहीं उसको, कुछ नहीं, और वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दिया. और वो जो है मेरे फ्रेंड, उसको इतना सीवियर एनाफाइलेक्सिस हो गया कि फ्रॉम इट्स नेल ऑफ फिट, पैर के नाखून से लेके पूरे बाल तक वो पूरी जल गई ड्यू टू दैट एलर्जिक रिएक्शंस बाय पेनिसिलिन. उसका पूरा बदन जल गया. ठीक है. दैट इज एनाफाइलेक्टिक शॉक, दैट इज ड्यू टू पेनिसिलिन. एंड सम पीपल्स आर आल्सो एलर्जिक टू द पीनट्स, रबर लैटेक्स. ये एलर्जी आपको किसी का भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल विटामिन का भी वो एलर्जी हो सकता है. ठीक है. बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एलर्जी बहुत लोगों को होता है. जैसे उनको अगर बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन देंगे आप, तो वो पूरा बदन सूज जाएगा, मतलब एडिमा हो जाएगा, और उनके शरीर पे पूरा प्रोराइटिस, रैशेस हो जाएगा. That is nothing but the anaphylactic shock. So severe allergic responses which is triggered by individual sensitive to individual item like penicillins, peanuts, vitamins, then rubber latex or any other injection. Okay, these factors act as an antigen, and they will trigger antibody antigen, or they will trigger the immunoinflammatory reactions, and because of that there will be release of various mediators like histamine, bradykinin, leukotrienes, and all that. They will play their own game over there. So they will cause swelling, inflammation, pain, and all that. And that is nothing but the anaphylactic shock. Okay. So this slide is very important. Try to remember these all kind of shocks. They are very important. Okay. Is that clear?